Morning students, my name is Vora, Assistant Professor of Electrical Department at Sri Swaminarayan Institute of Technology. To start with the new subject of 6 semesters and subject name is the Microprocessor and Controllers, and first chapter is Microprocessor and Microcontrollers. यानी कि फर्स्ट चैप्टर्स आपको इंट्रोडक्शंस के बेस में है कि माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर क्या है, एंड द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर्स इज इंट्रोडक्शंस ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर्स एंड द माइक्रो कंप्यूटर्स. टू स्टार्ट विथ द फर्स्ट टॉपिक, introductions. So microprocessor is nothing but the one type of the computers. So microprocessor are the integrated electrical circuit that are capable of the carrying out of the instructions of a computer software applications or program. यानी कि माइक्रोप्रोसेसर में इनबिल्ट कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस होती है जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए जो एप्लीकेशन और प्रोग्राम चाहिए वो हम कर सकें. सो दिस इलेक्ट्रिकल सर्किट रिसीव द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द एप्लीकेशंस और प्रोग्राम एंड interpret these instructions and the execute an actions or set of the actions based upon the instructions called for. So जो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जो प्रोग्रामिंग, जैसे मैंने अभी बताया, जो इंस्ट्रक्शंस है, इंस्ट्रक्शंस यानी कि एक टाइप का प्रोग्रामिंग होता है, उसको रीड करता है और एग्जीक्यूट करता है जिस तरह से हमको प्रोग्राम चाहिए. सो द डिवाइस दैट यूज द माइक्रो प्रोसेसर इज नॉर्मली कैपेबल ऑफ मैनी फंक्शंस सच एज द वर्ड प्रोसेसिंग, then calculations and the communications via internet and telephone. So जो माइक्रो प्रोसेसर है वो डिफरेंट फंक्शंस के लिए हम यूज़ करते हैं नाउ डे. सो दे आर कैपेबल फॉर द such a word processing, calculations and communications and others prepared for the documents. So for example, the microprocessor would need to communicate with the video display to control the output data that a program may produce, and therefore the microprocessor would act as a device brain in that it transmit, receive and the interpret the data need to operate a device. हमको पता है कि कंप्यूटर में हम ब्रेन किसको कहते हैं, जो हार्ट है, जो हम इंटेल की आईसी यूज़ करते हैं, जिस आदि ब्रेन. सो इसी तरह जिस टाइप का वर्क चाहिए उस टाइप का हम प्रोग्राम रन करते हैं using the microprocessor. So microprocessor is one of the brain of the computers. So the microprocessor is a computer process which incorporate the functions of the computer's central programming unit. It means the CPU on a single interpreted circuit, means the IC. यानी कि CPU में हम IC जिसको बोलते हैं वो microprocessors, or the most few interpreted circuits. The microprocessor is the multi-purpose and clock drives, then register based, then digital integrated circuit which accept the binary data as a input and processes it according to the constructions stored its and sequential digital logic. So the microprocessor operates on the number of and the symbol repeated in the binary and numerical systems. So
माइक्रो प्रोसेसर के अंदर क्लॉक ड्राइव्स है, देन रजिस्टर बेस है, डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट्स है विच एक्सेप्ट द बाइनरी डेटा एज अ इनपुट। सो इनपुट के लिए हम कौन कौन सी चीज़ दे सकते हैं, एंड द माइक्रो प्रोसेसर कंटेन द बोथ द कॉम्बिनेशंस ऑफ द लॉजिकल एंड द सिक्वेंशियल लॉजिक। पूरा हम आगे स्टडी करेंगे कि माइक्रो प्रोसेसर में किस तरह का होता है। एक तो हमने देखा कि माइक्रो प्रोसेसर क्या है, पर यहाँ पे हम कंप्यूटर्स बोलते हैं, तो डिजिटल कंप्यूटर्स क्या है। सो द डिजिटल कंप्यूटर कैन बी कंसिडर एज द डिजिटल सिस्टम दैट परफॉर्म द वेरियस computational task, so that the microprocessor is the computer processor which incorporate the functions of the computer's centrals and जैसे मैंने बताया CPU है और one type of the IC. So microprocessors operate on the number of symbols and represent the binary numerical systems, and the digital computer can be considered as the digital system perform the various computational tasks. So the first electronic digital computer was developed in the 1940s and was used the primarily for the numerical computations. So by the conventions, the digital computer use the binary numbers which has the two digits 0 and 1, and the binary digit is called a bit. हम जानते हैं कि कंप्यूटर में सिर्फ 0 और 1 की ही इम्पोर्टेंस है, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 में ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं या वो ऑपरेट होता है। So the computer system is subdivided into the functional units, the hardware and software. So the hardware consists of all the electronic component and the electromechanical device that comprise the physical entity of the device, and the software of the computer consists of the instructions and the data that compute the मैनिपुलेट टू परफॉर्म द वेरियस डेटा प्रोसेसिंग टास्क। हम जानते हैं कि कंप्यूटर में देर आर दी टू मेन थिंग्स, वन इज दी हार्डवेयर एंड अदर वन इज दी सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर इज दी वन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड द इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंपोनेंट्स, एंड द सॉफ्टवेयर इज कंसिस्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शंस एंड द डेटा दैट द कंप्यूटर इज मैनिपुलेट टू परफॉर्म द वेरियस डेटा प्रोसेसिंग टास्क। नाउ अभी हमने जो देखा कि माइक्रो डिजिटल कंप्यूटर्स में तो किस तरह का उनका बेसिक ब्लॉक डायग्राम होता है। तो हमने देखा कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, द फर्स्ट वन इज द रैंडम एक्सेसरी मेमोरी यानी कि रैम। सो द रैंडम एक्सेसरी मेमोरी रैम फॉर द रियल टाइम प्रोसेसिंग ऑफ द डेटा, यानी कि जब हम परफॉर्म कर रहे हैं उसको परफॉर्म करने के लिए जो प्लेटफॉर्म चाहिए वो रैम देता है, जो हम बेसिकली जानते हैं। देन आफ्टर द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU, so the CPU contain an arithmetic and logical unit for the manipulating the data, number of registers for storing the data, and the control the circuits for fetching and executing the instructions। यानी कि CPU is the main heart of the computers। CPU के अंदर डिफरेंट टाइप के रजिस्टर्स होते हैं जो स्टोरेज करने के लिए और परफॉर्म करने के लिए यूज़ होते हैं। They have also control द सर्किट फॉर द फैचिंग। फैचिंग मीन्स के जहाँ से स्टोरेज में जो इंस्ट्रक्शंस हमने ऑलरेडी जो डेटा फिट किए हुए हैं वो इंस्ट्रक्शंस को फैच यानी कि वो लाता है और एग्जीक्यूट करता है जिस टाइप का वर्क हम करना चाहते हैं। देन आफ्टर द इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग, सो द इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग
device for the generating input from the users and display the final result to the users. इनपुट आउटपुट मीन्स के हम कीबोर्ड से जो भी इनपुट्स देते हैं और जिस टाइप का वर्क हमको करना है वो एग्जीक्यूट होता है, उसको बोलते हैं आउटपुट डिवाइसेस. सो द मेमोरी यूनिट ऑफ द डिजिट कंप्यूटर कंटेन द स्टोरेज फॉर द इंस्ट्रक्शंस एंड द डेटा, and the input output device connected to the computer includes the keyboard, mouse, terminals, magnetic disk drives and other communications. So these are the input devices and the output is represented on the display यानी कि स्क्रीन. वो टीवी अभी तो नावडे के टीवी है जिसको हम यूज़ करते हैं एज अ मॉनिटर्स. दैन मॉनिटर के लिए अलग अलग मॉनिटर्स आते हैं. सो दीज आर दी बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ दी डिजिटल कंप्यूटर्स. सो डिजिटल कंप्यूटर्स में हमने देखा कि माइक्रो प्रोसेसर इज अ मेन पार्ट ऑफ दी सर्किट. सो नाउ स्टार्ट विद दी माइक्रो प्रोसेसर्स. So the microprocessor is an important part of the computer in a architecture without which you will not be able to perform anything on your computers. So microprocessors का importance हमने देख लिया है. So it is the programmable device that take in an input, perform some arithmetic and the logical operations over it and the produce the desired output. In simple word, the microprocessor is a digital device on a chip which can fetch the instructions from the memory, decode and execute them and give the result. So the microprocessor take a bunch of the instructions in the machine's language and execute them and telling the process which has to do, and the microprocessor perform the three basic things while execute the instructions. Is the first one is it perform some basic operations like the addition, subtractions, the multiplications, divisions and some logic operations using it in arithmetic and logic unit means ALU. And the new microprocessor also perform the operations on the floating point number also. यानी कि ALU अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट्स है, उसमें जो भी हम मैथमेटिकल स्टेप्स करना चाहते हैं जैसे कि एडिशंस है, सब्सट्रैक्शंस है, मल्टीप्लिकेशंस, डिविजन्स है, वो हमारे लॉजिक के हिसाब से हम ALU में परफॉर्म करते हैं. द सेकंड इज द डेटा इन द माइक्रोप्रोसेसर कैन मूव फ्रॉम वन लोकेशन टू द अनदर. अब वन लोकेशन टू द अनदर लोकेशन यानी कि जैसे ही हमने बोला कि कोई भी प्रोग्राम को इंस्ट्रक्शंस को हम एग्जीक्यूट करते हैं तो वो एग्जीक्यूट करने के लिए वो जो ऑलरेडी डेटा फीड है वो फैच करते हैं, तो वो मूव करना पड़ता है जिस लोकेशन पे हो वहाँ से. तो वो एक डेटा माइक्रोप्रोसेसर में होता है मूव यूजिंग ऑफ द रजिस्टर्स. नाउ एंड द लास्ट वन इट हैज़ द प्रोग्राम काउंट द रजिस्टर दैट स्टोर द एड्रेस of the next instructions based on the value of PC, and the microprocessor jump from one location to the another and take a decisions. यानी कि जो माइक्रोप्रोसेसर्स के अंदर जो प्रोग्राम काउंटर होता है यानी कि जो एग्जीक्यूट करता है वो कहीं पे भी जंप करने के लिए प्रोग्राम काउंटर यूज़ करता है. सो these are the basic. अब जैसे मैंने बताया कि डेटा इन अ माइक्रोप्रोसेसर्स कैन बी मूव फ्रॉम द लोकेशन टू द अदर्स यूजिंग ऑफ द different registers array and also mentions the flag. अब फ्लैग क्या है वो हम आगे देखेंगे.
Now, the evolutions of the microprocessors, यानी कि we can categorize the microprocessor according to the generations or according to the size of the microprocessors, यानी कि हम माइक्रोप्रोसेसर को कब जनरेट हुआ, यानी कि कब उसको बनाया गया और उसको दूसरी कैटेगरी है कितनी साइज़ का है। तो हम जानते हैं वैसे तो 4 बीट, 8 बीट, 16 बीट, 32 बिट्स एंड 64 बिट्स है, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज द फर्स्ट जनरेशन इज द 4 बीट माइक्रोप्रोसेसर्स एंड द फर्स्ट जनरेशन माइक्रोप्रोसेसर वेर introduced in the 1971 to 1972 by the Intel corporations. It was named the Intel 4004 since it was a 4-bit processor. So it was a processor on a single chip and it could perform the simple arithmetic and logical operations such as addition, subtractions, booleans or and booleans and these processors are control unit capable of performing the control functions like the fetching and instructions from the storage memory and decoding it and then generate the control pulse to execute it. So these are the first generations. Then after the second generation is the 8-bit microprocessors. So second generation microprocessor were introduced in the 1973 and again by the Intel. It was the first 8-bit microprocessor which could perform the arithmetic and logical operations on the 8-bit words. So it was the Intel 8008 and another improved version was Intel 8088. Now the third generation in 16 bits. So third generations microprocessors introduced in the 1978 were represented by the Intel's 8086, Zilog 8Z 800 and 80286, which were the 16-bit processor with the performance like the mini computers. So in the after the 1978 we know that the first big mega computer will be launched. Then after the fourth generations is a 32 bits microprocessor. So the several different computer introduced in the 32 bits microprocessor, but most popular is one of the Intel 80386 and the last one the fifth generation 64-bit microprocessors. From the 1995 to now we are in the fifth generations. After the 80856 the Intel came out without a new processor, namely the Pentium processors, followed by the Pentium Pro CPU, and which allows the multiple CPU in a single system to achieve the multiprocessing. हम जानते हैं कि आफ्टर 1979 के बाद हम जो पेल्टियम यूज़ करते थे उसके बाद तो बहुत सारे चेंज हो गए, जैसे कि ड्यूअल टू कोर एंड एक्सेट्रा। बट 16-4 जो प्रोसेसर्स है उसमें हम परफॉर्म कर सकते थे। प्रोसेसर्स कैन बी परफॉर्म दी सेलेरॉन ड्यूअल कोर ऑक्टा कोर प्रोसेसर यूज़ होते थे और कंसिडर होते थे। सो दीज आर दी evolutions of the microprocessors. Now the basic term of the microprocessors is, the first one is the instruction set. So what is the instruction set? जैसे हमने आगे बहुत एक्सप्लेन किया कि इंस्ट्रक्शंस है, प्रोसेसर्स है। सो व्हाट इज द इंस्ट्रक्शन सेट? सो इंस्ट्रक्शन सेट इज नथिंग बट द ग्रुप ऑफ द कमांड
that the microprocessors can understand is called the instruction set, and it is the interface between the hardware and software. देन आफ्टर दी बस यानी कि जो भी डेटा है उसको उसकी लोकेशन से हम एग्जीक्यूट तक जो भी ट्रांसफ़र करते हैं उसको बस बोलते हैं इन बेसिकली. तो सेट ऑफ द कंडक्टर इंस्ट्रक्टेड intended to the transmit the data address or a control informations to the different elements in a microprocessors, and the microprocessors will have the three type of buses: data bus, address bus and control bus. Then after the IPC, the instructions per cycles, so it is the measure of how many instructions a CPU is capable of executing in a single clock. यानी कि सिंगल क्लॉक में एक साइकिल्स में CPU कितनी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर सकता है. देन आफ्टर द क्लॉक स्पीड, it is the number of operations per second the processors can be performed, and it can be expressed in the megahertz or gigahertz. It is also called the clock rate. Then after the bandwidth, the number of bits processed in the single instructions called the bandwidth. Then word length, the number of bit the processors can process at a time is called the word length of the processor, and the 8-bit microprocessors may process the 8-bit data at a time. Then data type, the microprocessor supports the multiple data type from like the binary, ASCII, then signed and unsigned numbers. So these are the basic terms of the microprocessors. Now the features of the microprocessors. So what is the main features of the microprocessor is, first one is the low cost. So due to the integrated circuit technologies, the microprocessor are available at a very low cost, and it will reduce the cost of the computer systems. Then after the high speed, due to the technology involved in it, the microprocessor can work at a very high speed. It can execute the millions of the instructions per second. Then after the small size, मैं आपको बता दूं कि 1918 में एक रूम जितना बड़ा कंप्यूटर था उसको हैंडल करने के लिए. नाउ द स्मॉल साइज, so microprocessor is the fabricate in a very less footprint due to the very large scale and ultra large scale integrated technology. So because of this, the size of the computer system is reduces. Versatile, the same chip can be used for the several applications, therefore the microprocessor are as a versatile. Then low power consumptions, the microprocessor are using the metal oxide semiconductor technology, so which consume less power. Then less heat generation, so microprocessor uses the semiconductor technology, so which will not emit the much heat as compared to the vacuum tube device. Then reliable, so microprocessor is failure rate is very less, so hence is very reliable and the portable. Due to the small size and the low power consumptions, microprocessors are the portables. So these are the main features of the microprocessors. Now the microcomputer. So जैसे ही हमने देखा कि what is the digital computers, then after हमने देखा कि microprocessors. So microprocessor is also the one type of the brain of the microcomputers. So what is the microcomputers? So the microcomputer is a small and relative inexpensive computers with the microprocessor as a
इट्स द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जैसे ही मैंने आपको बताया CPU, इट इंक्लूड्स द माइक्रोप्रोसेसर एंड द microprocessors memory and the input output facilities. So the microcomputer became the popular in the 1970s and the 18s with the advance of the increasingly powerful microprocessors. For example, the microcomputers are the Intel 8085 controllers, a single board computers. जैसे अभी हमको पता है कि CPU के अंदर एक सिंगल बोर्ड होता है, तो सिंगल बोर्ड में इंटेल 8085 IC जो बड़ी सी होती है वो. सो द जनरल आर्किटेक्चर ऑफ द माइक्रो कंप्यूटर इज द फर्स्ट वन इज द इनपुट डिवाइस, जैसे कीबोर्ड है, क्लॉक है, देन अनदर डिवाइसेस विच इज कनेक्टेड विद द इनपुट आउटपुट पोर्ट ऑफ द CPU. Then output device is also connected with the input output port. After the CPU and memory. So जैसे हमने आगे देखा कि डेटा बस होता है जो डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, जैसे कि मेमोरी में जो लोकेशंस में है वो CPU में और इनपुट आउटपुट पोर्ट में एग्जीक्यूट करने के लिए यूज़ होता है. सो दे हैव दी कनेक्टेड विथ दी बोथ द साइड, डेटा दे भी सकता है और ले भी सकता है. हम जानते हैं कि CPU में से हम कुछ भी स्टोर भी कर सकते हैं और स्टोरेज को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं. इन सिमिलर वे द एड्रेस डेटा यानी कि जहाँ पे एड्रेस है, अगर जैसे ही हम कंप्यूटर के अंदर ये डिफरेंट ड्राइव्स जनरेट करते हैं, जैसे कि C ड्राइव्स है, E ड्राइव्स है, और उसमें जहाँ पे लोकेशंस हमको से एड्रेस करना है कि यहाँ पे हमारा जो डॉक्यूमेंट्स पड़ा हुआ है उसको एग्जीक्यूट करना है, तो उसको एड्रेस डेटा लाना पड़ता है. सो दे हैव कनेक्टेड विथ द सिंगल वन. सो दीज आर द जनरल आर्किटेक्चर्स ऑफ द माइक्रोप्रोसेसर्स. So the general architectures, the first one is the memory. So the memory consists of the RAM and ROM. The purpose of the memory is to store the binary codes for the sequence of the instructions you want the computer to carry out. Then after the input output devices, so input output or the input output sections allow the computer to take in the data from the outside world or send the data to the outside world. Then after the CPU, in a microcomputer the CPU is the microprocessors and fetching the binary code instructions from the memory, decode the instructions into the series of the simple actions and carried out these actions in a sequence of the steps. So these are the CPU. So this one is the input output, this one is the memory and ROM, which one is the interconnected with the both the side of the data transfer or executed. Then after the system bus is connected with the main system. So the main CPU is, जैसे ही हमने आगे देखा था कि the microprocessor divided in the three main segments. The first one is the ALU, arithmetic and logic unit, जिसका वर्क मैंने आगे एक्सप्लेन किया था कि जो भी अरिथमेटिक प्रोसेस करना है, यहाँ माइक्रो प्रोसेसर के अंदर समझ लो कि 3 टाइप के रूम्स है. उसमें फर्स्ट में मेन, जैसे हमारे घर में क्या होता है, जैसे कि समझ लो कि मेन थिंग इज़ दी, एक 2 रूम है और एक मेन हॉल है. सो मेन हॉल में बाहर से आने के लिए मेन हॉल ही होता है अगर कहीं पे भी जाना हो घर में. सो ALU इज़ दी वन टाइप ऑफ द मेन हॉल. सो ALU के अंदर कोई भी इंस्ट्रक्शंस को सब्ट्रैक्शंस करना है, जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है वो ALU में होता है. देन आफ्टर द रजिस्टर एरे. सो रजिस्टर एरे मीन्स के स्टोरेज डेटा, जहाँ पे हम जो भी डेटा है वो स्टोर करते हैं.
and last one is the CPU, the control unit. So CU control unit is the main जो कंट्रोल करना है, जिस तरह से एग्जीक्यूट करना है, उसके लिए ये कंट्रोल यूनिट यूज होता है. सो दीज आर द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ द माइक्रो कंप्यूटर्स. सो द टुडेज लेक्चर इज कंप्लीट. If any questions regarding this topic, you can call me. If any query regarding this topic, you can mail me. My mail ID and the contact number is in your screen. Thank you.